Hi friends, today I'm going to discuss with you one of my family affair, yes, right? So it is like that one of my sister lives in New Zealand and it is just 2 years of her marriage. And today she gave me a call in the morning that I am planning to have a separation from this person. So I was thinking this separation, is this a separation for some time, or she's going to take a step towards taking a divorce or something like that. So getting deep into the understanding, like why the things are not working. So what I concluded, maybe I have shared with her also broadly, but the glimpse I will share with you, that dear friends, लव एट फर्स्ट साइट होता था, लेकिन ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, इसमें लव एट फर्स्ट साइट रोज ही होता है. सो ऐसे तो साइट्स आ गए हैं, एप्स आ गई हैं, आपके friendship sites, for every age group. No one is alone today. So पहले ऐसा नहीं होता था, डिजिटाइज नहीं था वर्ल्ड इतना, तो लव एट फर्स्ट साइट सक्सेसफुल भी होता था. पर्सन यूज टू फील that he is for me and I am for her. But these days, you can never say he is for me and she is for him. No, they are for many. So I'm not saying it goes with all. It does not go at all, because there are personal, feelings about a partner, about a partner in relationship and a couple also. So I would say first impressions do work, that yes, it is a shimmery, glowy, and love at first sight, but I would say it is good to have a more information about a person subsequently, as the you will be able to have more interactions. You will be able to know person's mental wellness, which plays a very important role. Generally ये हमें पता ही नहीं चलता किसी का, how the person is mentally sound also, how is the person's physiology, how is the person's psychology, and how the person is raised up, and what pressure of work that person is having at his or her workplace. These all things also contribute इन सेटिंग अप अ पर्सनस नेचर. वो कहते हैं ना, एक सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करता है, लेकिन ये जो ह्यूमन ब्रेन और पर्सोना है, ये सभी डोमेन्स में काम करता है. तो हम जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, हम जिसके साथ अपनी फ्यूचर को सोच रहे हैं, तो हमें ये सारे फैक्टर्स देखने के लिए वी नीड टू हैव सब्सिक्वेंट मीटिंग्स ना, एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी कज़न की वो मीटिंग्स नहीं हुई थी बहुत फॉर्मली, 8, 10, 12, 15 मीटिंग्स हुई, एंड देन she was married. So I feel that a lot of information one person would be able to draw when a person feels like, that I'm going, this person is a right fitment for me. So this will only happen if you are having a good long relationship with that person. So my dear friends, never crystallize thing in one go. Have that crystallization process. हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, crystallization is a process. तो वो crystallization होने दीजिए, तभी ये स्टेप लीजिएगा. लाइफ इज वंस. सो जो इमोशंस लोडेड हो जाते हैं, वो हमें आगे बढ़ने भी नहीं देते हैं. आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम नेक्स्ट वी आर फाइंडिंग अ पर्सन. आगे हमारा मेंटल हेल्थ में, हमारी फिजियोलॉजी में, हमारी ओवरऑल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, और हमारे फ्यूचर गोल्स में हम बहुत पीछे हो जाते हैं. सो आई वुड से यू दैट वेन एवर यू are liking a person, never have that love at first sight. My sister is facing a lot of problem, today, because of that one reason, that you don't know much about a person's behavior, person's anger, person's holistic well-being of his or her mental wellness. So ये सब चीज़ें बहुत मिसिंग थी मेरी सिस्टर की लाइफ में. तो मैं आज आपके साथ मैंने ये चीज़ शेयर करी, मेरा थोड़ा दिल भी हल्का हो गया है आपके साथ शेयर करके. और मैं ये कहूँगी, आज के टाइम में लोगों के पास एक हैंडसेट नहीं, 2 हैंडसेट हैं. इसका मतलब उनके फ़ोन में 2 व्हाट्सएप, कई सारे फेसबुक और कई सारे इंस्टाग्राम चल रहे हैं. अब उनका माइंडसेट कहाँ चल रहा है और कैसे वो टाइम को अपना मैनेज कर रहे हैं, that they only know. Hats off to people having 2 handsets and 4 WhatsApp. हमसे तो एक फ़ोन और एक फेसबुक अकाउंट, एक इंस्टाग्राम अकाउंट, और
एक नंबर हैंडल नहीं होता, एंड पीपल आर हैंडलिंग अ लॉट. सो whenever you say I like that person, do keep in mind how the person is being raised up, if the person is working, what type of job the person is, what kind of pressure the person is having, and what is the physiology, psychology, and mental well-being of that person. So what my sister is going through a pain, I don't want anyone should go under this pain. So you must have subsequent meetings and a lot of information you must have to make us to say this is the right fit. So right fit takes time. एक जिंदगी को हम वो कहते हैं 40 साल 50 साल एक पार्टनर के साथ बिताते हैं, अगर हमें उसके साथ मिलने जुलने में 2-3 साल भी लगाने हो तो आई वुड से ये इसमें कोई गलती नहीं है, एंड वी शुड इन्वेस्ट दैट टाइम. बिकॉज हमारी जब शादी हुई थी, वी वर इन द एरा व्हेन एमटीएनएल वाज देयर. सो अब जो एरा है वो 4 हैंडसेट्स वाला, 2 हैंडसेट्स वाला, और इतने सारे एप्लीकेशंस एंड इतने साइट्स हैं. Hats off. So anyway, truth comes from here and here. That is his best thing. So my dear friends, keep in mind when you say I dived into this with this person in the journey because I liked her or I liked him on the first sight. No, that is a dhoka. So you have to have subsequent meetings. Anyways, I have to go home. मैंने just अभी गाड़ी पार्क करी and I was feeling little loaded. So I thought why not to share on YouTube with all of you, and it would be a eye opener as well. So like, share and subscribe my channel. Learn with Charanjit.